All right, we're live. Let's start off. So, in the last class, we ended it having this discussion on arrays, 2D arrays, and stuff like that. But if you remember, uh, I gave you this scenario kind of कि हम ये तो देख लिया कि how do you declare a 1D array, how we deal with 2D arrays, how we write code to populate it, how we write code to get data from it. But we missed one important aspect, and that was basically to see how can you search for some specific item within the what do we call it, array. So like for instance, if I have an array up here, like अगर ये मैं एक array इस तरह बना देता हूँ, which is basically a box, right? And इसके अंदर this array is basically storing nothing but names. Okay, so it is basically storing the names. So अगर मैं ये देखना चाहूँ कि names of maybe registered names, कोई हम वो करें गेमिंग टूर्नामेंट जिसके अंदर हम रजिस्टर्ड नेम्स को देख रहे हैं. सो क्या नाम आ सकते हैं? मे बी लेट्स से मनार, एक तो ग्राफिक टैबलेट में से करें, लेट्स से आ गया रेहान, लेट्स से आ गया अहमद, लेट्स से सैफुल्ला एंड सो ऑन. अब अगर हमने ये एक हमारे पास एरे है एंड आई हैव टू राइट अ कोड काइंड ऑफ इन अ वे कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि भाई डू वी हैव द नेम ऑफ लेट्स से अहमद in the array or not. So like if I want to search whether we have the name Ahmed in an array, 1D array, तो हम कैसे करेंगे? तो लाइक इसका करने का मकसद ये जो आज डिस्कस करेंगे, दिस इज बेसिकली नोन एज linear search. Linear search is a concept taught to you within the programming aspect of computer science paper 2, where you are basically asked to find a specific value from an array. आप check करते हो कि whether the name, whether the value, whatever thing you are trying to compare it against, whether that thing exists in that array or not. Like for instance, अगर मैं आपको एक program बनाऊं कि यार we have this array of the names, सही है? What I want you to do is कि आप इसको इस तरह execute करो कि हम एक इनपुट लेंगे यूजर से, सही है? एंड इनपुट के बाद हम करेंगे ये कि हम उसे बोलेंगे कि आप इनपुट करें नाम, फिर मैं चेक करूंगा कि अगर मुझे वो मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो फिर मैं कहूंगा कि नाम नहीं मिला. तो अब इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने के लिए हम सबसे पहले इस तरह करेंगे ना कि आई विल, सबसे पहले आपके ख्याल में से क्या होगा? डेफिनेटली इफ आई हैव टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक नेम, आई नो वन थिंग, I can see the positions, right? This is position number 0, this is position number 1, this is position number 2, and this is position number 3. So in your exams, they will clearly mention that the loop, that the array is maybe consisting of 4 students. You know, when it's 4 students, it's up to you whether you want to do it like 0 to 3, or if it's not given, then again, it's up to you whether you want to take it as 1 to 4. Say, आपकी मर्जी है. But now, once we have this, हम करेंगे क्या कि हम हर नाम को यहाँ से निकालेंगे. Like I'm going to be saying कि कोई नाम मैंने input किया, input x, कोई नाम, and then I'm going to be checking whether this x is basically equal to this name. सही है? And if it is equal, तो I can say okay, print found. सही है? If not, तो फिर हमने बोलना है कि नहीं मिला. अब इसका हम प्रॉपर जो कोड लिखेंगे ना, दैट इज बेसिकली नोन एज लीनियर सर्च. नाउ इन योर एग्जाम इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द नेम, बिकॉज कभी कभार होता ही है कि they're going to be telling you or giving you maybe a flow chart and उसके अंदर यही चीज हो रही होगी, and then they will be like, what's the purpose of the algorithm? This is very much tested in those flowchart questions, where in the end, usually after their dry run table, they tell you this code and they ask this question, what's the purpose of this program? And वहाँ पे आपने बताना होता है कि what's the whole mechanism, like why are we doing this? So you need to tell like we maybe implemented a linear search program to find a specific value within an array, right? So that is how you attempt those questions. But for that it's important कि आप इसको सिर्फ ये ना हो कि आपके जहन में हो कि यार ये तो मुझे भी पहले से पता है. Like the concept is very simple and you might be like इसमें मुश्किल क्या है? But you should understand that when we try to implement this program within your paper 2, we call it as a linear search. Say, now what happens is सबसे पहले definitely if I want to find some value, I'm going to be taking some input, right? So I might be like input name. सो मैं यूजर को बोल रहा हूँ सबसे पहले ही कि यार आप मुझे कोई इनपुट दो, कोई नाम मेरे साथ शेयर करो जिसको मैं प्रोसेस कर सकूं, जिसके थ्रू मैं बाकी डेटा फेच आउट कर सकूं. वंस आई गेट दिस, मैंने क्या करना है? आई नीड टू डू वन थिंग. मुझे पता है कि यार मैंने इनको बारी बारी चेक करना है. तो हमने जितने एरेस को पॉपुलेट किए, जितने एरेस से हम डेटा निकाल देंगे, वी वर मेकिंग यूज ऑफ अ लूप, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक यूज ऑफ अ लूप. किस तरह? आई कैन से अब इसके अंदर 2 तरीके हो सकते हैं. अब एक बात है, इफ आई मेक यूज ऑफ द फॉर लूप, लेट्स से फॉर लूप का अगर मैं यूज करूं, उसमें एक मसला, लेट्स से अगर मैं बोलता हूं फॉर काउंट, सही है,
1 to 4 कर देते हैं, और सो 1, हाँ 1 to 4, 1 to 4, माय बैड। अगर मैं ये बोलूँ फॉर काउंट, या बल्कि अगर 0 से किया तो 0 to 3 कर दें, फॉर काउंट 0 to 3। इफ इफ नेम्स, नेम्स के साथ क्या, इफ नेम्स काउंट, व्हिच बेसिकली मींस व्हाटएवर द स्पेसिफिक वेरिएबल इज, इफ दैट इज इक्वल टू द इनपुटेड नेम, तो आपने क्या करना है, देन आउटपुट फाउंड। सही है, देन आउटपुट फाउंड, आउटपुट फाउंड। एंड एल्स हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये पहले वाले में लेट्स से मैं बोलूँ कि अगर मुझे फाइंड करना है द नेम सैफुल्ला, लेट्स से आई इनपुट द नेम सैफुल्ला पे, सैफुल्ला। नाउ इफ आई इनपुट सैफुल्ला और वो काउंट 0 में जाके काउंट 0 पे क्या आएगा, डेफिनेटली इट्स गोना बी मनाल। सो मना, इफ मनाल इज इक्वल टू सैफुल्ला, नो इट्स नॉट, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो आउटपुट कर देगा नॉट फाउंड। लेकिन फिर वो काउंट नंबर 1 पे जाएगा तो फिर रियान के साथ भी नॉट फाउंड आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर अहमद के साथ भी नॉट फाउंड, फाइनली 3 पे जाके वो बोलेगा फाउंड। We don't want this useless number of founds to be printed, not found to be printed, right? We just need a simple, efficient code. तो एक ही दफा में बताए found or not found. So if I don't write the word not found up here, तो मैं क्या करूंगा? This is the problem जो मैं identify करना चाह रहा हूँ, कि अगर मैं यहाँ पे end if कर लेता हूँ, end if, and I let's say कि next count, इसके अंदर एक बड़ा मसला है। If the name, let's say for instance, मैं input करता हूँ Manal. If the name Manal exists within the array, it is going to be outputting found. But what if I try to input a name such as Maz? So if I try to input the name Maz into this array, you can see that कि वो नाम exist ही नहीं करता. So it's going to repeat, like किस तरह चलेगा? Let's try to try run it. So input name Maz for count 0 to, so सबसे पहले names के अंदर आगे 0. What is name 0? It's Manal. So we are comparing up here. Is Manal equal to Maz? No, it's not. If it's not, तो we won't be running any of this. And if पे चले जाएगा, next count की value होगी 1. Now we're checking, is Rayan equal to Maz? No, it's not. Again, and if, next loop. 2 पे, is Ahmed equal to Maz? Again, no. Is Saifullah equal to Maz? No. And next count, hote, we come up here and we see the biggest issue with this for loop up here is, issue with for loop, this is a comment by the way, issue with for loop here is, we don't have a message for not found. अब मतलब ये जो अभी मैंने कोड चलाया, दिस इज काइंड ऑफ लीनियर सर्च, लेकिन इट्स नॉट एफिशिएंट बिकॉज इट्स नॉट टेलिंग मी कि वेदर आपके वैल्यूज में कोई मिला है या नहीं। अगर मिल जाता है तो फिर तो मुझे पता लग रहा है, मिल गया तो इट्स गोना आउटपुट फाउंड। बट व्हाट इफ वो कभी मिला ही ना, कभी मिले ही ना हमें, तो इट्स नेवर गोइंग टू बी आउटपुटिंग एनी वैल्यू ऑनटू द स्क्रीन, व्हिच इज समथिंग वी डोंट वांट, बिकॉज वी वांट एन आउटपुट, वी नीड समथिंग जो कि मुझे क्लियर कट बताए कि यार यस मिल गया, नहीं मिला तो वो भी क्लियर कट नजर आ रहा है। इट शुड नॉट बी कि मैं बोलूं कंप्यूटर शायद स्लो हो गया, या मे बी देयर इज दिस लेटेंसी इशू और मे बी सम लैग व्हिच माइट हैव रिजल्टेड इन दिस प्रॉब्लम। सो हाउ कैन आई टैकल दैट? सो इफ आई वांट टू टैकल दैट, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं एक कॉन्सेप्ट को लाता हूं जिसके अंदर व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं ये फॉर लूप को नहीं चलाता। व्हाई नॉट मेक यूज ऑफ सम अदर लूप, मे बी लाइक रिपीट लूप। अब अगर मैं रिपीट लूप को चलाता हूं तो आई नो वन थिंग कि रिपीट लूप ऑलवेज वर्क्स विद अ कंडीशन। हम बोलते हैं कि आपने रिपीट करना है until some specific thing happens, and what will be that until वाली बात? So I have to repeat the whole thing until what? Until I see कि यार मेरा फाउंड वाला जो वो है ना, until यार तो मुझे मतलब अगर मैं कोई चीज को ढूंढ रहा हूँ तो मैं उसको तब तक रिपीट करते जाऊंगा ना, या मुझे वो चीज मिल जाए, मतलब या मुझे पता लग जाए कि अगर एलिमेंट 1 के ऊपर आई एम लेट्स से फाइंडिंग मास एंड मास इज ऑन एलिमेंट नंबर 1। तो अब ऊपर वाले कोड में एक और मसला है, पता है क्या मसला है? यू गो अप हियर एंड you say, let's say कि I input the name Manar. Now the lucky part is, the lucky thing up here is that Manal is the very first element, right? So it should be directly outputting the word found onto the screen, which clearly is all good to go. हमारे पास found आ गया, but then you see that the program does not end up here. It does not end. इसको थोड़ा सा thick कैसे करते हैं ये भी नहीं, my bad, इसका मजा नहीं है। Let me change the color though. So it does not end up here. Say that's a big issue because ये यहाँ के बाद हमने count for loop चलाया, तो for loop के लिए तो it's important कि भाई आपका this is going to be going from 0 to 1 then to 2 and finally to 3, which is useless because हमें 2 दफा वैसे ही for no reason कोड को रन करना पड़ रहा है। तो जब हम इस तरह के कोड को जो जहाँ पे हमारा पहली दफा में ही हो जाता है but we are kind of doing it again and again, this is what we call as an inefficient code। सही है?
So if in exam they sometimes tell you कि why not make use of a for loop, तो आपने बोलना है कि such codes, such code that runs for no reason, for no reason. For example, for loop in above case, for loop in above case is basically what is an inefficient code. क्योंकि हम inefficiency कहाँ से आ रही है, हम यूजलेस इनएफिशिएंट, हम यूजलेस क्या करें, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर यूज करें, व्हिच वी डोंट वांट, बिकॉज वी वांट टू इंश्योर कि यार हम एक ही गो के अंदर उसको चलाएं एंड इट वर्क्स द राइट वे। जैसे ही हमें पता लगता है क्योंकि मनाल इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट आउटपुट प्रोसेसर के ऊपर, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में याद है फेच एग्जीक्यूट साइकिल, इट्स द सेम थिंग, लाइक यू हैव टू run each line within the fetch execute cycle. So if I find it the very first attempt, why repeat it 4 times? उसके दौरान I can do make use of some other multitasking opportunity, maybe do some other task. And so this is where the problem basically comes in. So to solve this, we came up with this mechanism कि हम repeat loop को चलाएंगे, and repeat loop is gonna work until मुझे या तो अपना नंबर मिल जाए कि यार मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल गया, लाइक मनाल का नाम मैंने सर्च करना था एंड मनाल इज फाउंड, या फिर व्हाट आई कैन डू इसके अगर मैं काउंट चला रहा हूँ, क्योंकि रिपीट में यू नो कि वी नीड टू हैव अ वेरिएबल एट द टॉप, लाइक काउंटर या काउंट और अ वेरिएबल, दैट वेरिएबल काउंट अगर टोटल मुझे पता है कि 4 एलिमेंट्स हैं, लाइक अगर इसकी पहली वाली 0 होगी 1 2 3 एंड इट हैज 4 एलिमेंट्स इन टोटल, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 4 हो जाती है, ग्रेटर देन 4 कंसिडरिंग पहले वाले की वैल्यू 1 होगी, 1 2 3 4, द मोमेंट इट बिकम्स 5, तो आपने फिर भी प्रोग्राम को एंड कर देना। व्हाई? बिकॉज आई सी कि मेरे एरे के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम आई सी दैट आई हैव 4 एलिमेंट्स। सो अगर मैंने लूप चलाना हो तो मैं पांचवी दफा क्यों चलाऊंगा, इट वॉन्ट इवन वर्क बिकॉज देयर इज नो फिफ्थ एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इन एन एरर टू अकर। सो इफ माई काउंट वेरिएबल ग्रोज ग्रेटर देन, मतलब पांचवें एलिमेंट पे जाते जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर मुझे अपना नंबर मिल जाता है, तो आपने कोड को रोक देना। सो वी हैव दीस टू सिनेरियोस, वी नीड टू राइट अ कोड टू दिस कि अब ये चलेगा क्या। अब इसको करने का जो तरीका वो ये है कि लेट्स राइट द कोड अप हियर, कोड फॉर, बल्कि इससे लिख लो एफिशिएंट कोड, एफिशिएंट code for linear search. Now, this is important because what happens is they can give you an inefficient code and they can ask you to write an efficient one. So, आप करोगे क्या, आप सबसे पहले just like before, जिस तरह हमने पहले लिया, हम सबसे पहले लेंगे यूजर को बोलेंगे कि आउटपुट करके enter a name to search, right? So, if I want to, like in the 15 marker question, your code needs to be very much descriptive, like yeah, this is the tip for 15 markers. So like when you want to take an input from the user, आप स्क्रीन के ऊपर कोई चीज आती है ना कि like enter your age or something, so you always need to ask the user to input something. So what we can do up here is हम लिख देंगे कि output, then you have these quotation marks, please enter your name, enter your name. So now once we have this, I see कि मेरे स्क्रीन के ऊपर तो आ गया output enter your name. Now what I'm going to be taking an input, right? So मैं बोलूंगा input कर दो भाई कोई नाम, so input name. So आप नाम अपना इनपुट करोगे, लेकिन नाउ एट दिस मोमेंट मैंने ऊपर एक चीज आपको बता दी कि हमने दो चीजों का यूज करना है। एक तो मैंने देखना है कि यार ये मुझे कैसे पता लगेगा कि अगर मनाल फर्स्ट एलिमेंट ही मनाल है, फर्स्ट एलिमेंट विद इन द एरे इज मनाल, तो आई नीड टू इंश्योर कि यार मैं कोई इस तरह का मैकेनिज्म करूं कि इफ आई फाइंड मनाल टू बी द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे आउटपुट फाउंड करने की जगह मेरे पास कोई वेरिएबल हो फाउंड, जिसके अंदर मैं ये बोलूं कि यार कंसिडर इसके अंदर आप वैल्यू ट्रू कर दो। सो व्हेन इट बिकम्स ट्रू, तो यहाँ पे मैं देख लूं कि जैसे इफ योर वैल्यू ऑफ फाउंड इज ट्रू, तो आप लूप को एग्जिट कर लो। आई शुड मेक समथिंग लाइक दैट। अब उसको करने के लिए व्हाई नॉट हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करें जिसका नाम मैं कर लूं फाउंड। नाउ दिस फाउंड इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज फ्लैग्स, सही है, डिक्लेयर फाउंड। एंड नाउ यू नो वन थिंग, फाउंड के ना आपके पास दो ही डेटा टाइप्स है, आइदर यू से कि यस इट्स ट्रू, ट्रू का मतलब है कि यू डिड फाइंड द वैल्यू, राइट, कि मिल गई, या इट्स फॉल्स कि मतलब हमें वैल्यू नहीं मिली। तो इफ यू रिमेंबर व्हेन डिस्कसिंग डेटा टाइप्स, आई टोल्ड यू कि व्हेनेवर वी हैव अ सिनेरियो जहां पे वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, ट्रू और फॉल्स, तो उस डेटा टाइप को हम क्या बोलेंगे, बूलियन, इट्स नोन एज बूलियन। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिक्लेयर फाउंड एज अ वेरिएबल जो कि है बूलियन। नाउ दिस इज अगेन समथिंग जो कि आपने देखनी है कि इफ द एग्जामिनर डज नॉट क्लियरली स्पेसिफाई कि आपने डिक्लेरेशन करनी है, फिर आप डिक्लेयर ना करो, बट दिस इज जस्ट फॉर योर ओन एक्सप्लेनेशन। डिक्लेरेशन डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन
क्वेश्चन। सो इट्स इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, उसी में आपको आइडिया हो जाएगा वेदर यू हैव टू बेसिकली डिक्लेयर अ वेरिएबल और नॉट। सो नाउ व्हाट वी आर गोना बी डूइंग अप हियर इज कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है फाउंड, इसको मैंने बूलियन डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब क्या है? फाउंड का बेसिक मतलब ये है कि यार इट कैन ओनली स्टोर टू वैल्यूज, इट कैन आइदर स्टोर ट्रू और इट कैन स्टोर फॉल्स। तो जब भी हम कंप्यूटर साइंस के अंदर ये टर्मिनोलॉजी लाते हैं वेयर वी हैव टू टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, तो वी कॉल इट अ फ्लैग, वी कॉल दिस थिंग अ फ्लैग। नाउ फ्लैग हम इसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज अ फ्लैग कैन बी, अगर मैं ये बोलूं कि आपने देखा होगा, या अगर मैं ये बोलूं कि एक अपने टीम है, टीम ए अपने फ्लैग को रेस करे एंड टीम बी अपने फ्लैग को रेस करिए। सो अगर मैं ये बोलूं कि एक पोस्ट के ऊपर मैं गया और वहां पे टीम ए का फ्लैग लगा हुआ है, तो दिस मींस दैट स्पेसिफिक प्लेस इज ऑक्युपाइड बाय टीम ए। बट द मोमेंट टीम ए वाली जगह को टीम बी वाले कर ले एंड दे अपना फ्लैग लगा ले, तो आई गेट टू नो कि उसको टीम बी ने रिप्लेस कर दिया। सो द फ्लैग इज बेसिकली वन थिंग जो कि हमें बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, सही है। So whenever we have a variable like this जिसके अंदर हमारे पास two values and we use that to make a decision as in कि यार कौन सी चीज वो होगी, तो that is basically known as a flag, सही है। एंड ज्यादा इसके अंदर आपने कॉम्प्लेक्स उसमें नहीं होना, इट्स जस्ट दिस, सही है। So now अब क्या होगा, when we have a declare found वाला variable done, तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने अब काउंटर को डिक्लेयर करना है। व्हाई? बिकॉज डेफिनेटली आई नीड टू सी कि अगर मैं रिपीट अंटिल कर रहा हूँ तो इट डज नॉट रन द होल लाइफ, बिकॉज जैसे ही मेरे एरे की लिमिट खत्म होगी तो आई वांट द एरे द लूप टू एंड। सो उसके लिए व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ, डिक्लेयर count. It can be anything, it can be count, it can be counter, anything, whatever you want. So count, and what's going to be the data type? It has to be integer. Again, important point up here is that all these keywords like output, input, declare data type, all of these are in capital. So it's really important that you also kind of have them in capital words. सही है, इसको आपने वो नहीं करना। So now if I have a counter set up, तो मैं सबसे पहले ये बोल देता हूँ कि यार जब आप प्रोग्राम को चलाते हो तो you always initialize variables. Remember, we always initialize. अभी ये जो मैं comments डाल रहा हूँ, it's just to explain कि how to make use of comments and how should you be adding these comments into your 50 marker question. Variation देख रहा हूँ, variables, my bad. So whenever we are making use of variables, हमने उसको कोई डेटा असाइन करने होते हैं, लाइक जैसे आपने देखा हमने काउंट को 0 शुरू में बता दिया, काउंट को 1 कर दिया, समथिंग लाइक दैट। सो अब जब मैं शुरू में फाउंड है, फाउंड हैज ओनली टू वैल्यूज, राइट? इट कैन आइदर बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। तो अगर मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करूं तो आई नो वन थिंग, राइट, कि यार अगर मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करूं तो फाउंड के अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए? इट शुड बी फॉल्स, राइट? व्हाई? क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, आई हैवंट इवन चेक्ड, किसी चीज के साथ मैंने कंपेयर ही नहीं किया, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वेदर आपका जो कंपैरिजन है ये ट्रू हुआ है या फॉल्स? सो इन अ सिनेरियो लाइक दिस हम फाउंड को इनिशियलाइज कर देंगे विद व्हाट? वी आर गोना बी इनिशियलाइजिंग इट विद फॉल्स। मतलब हम जो वेरिएबल को ढूंढना चाह रहे हैं वो हमें अभी तक नहीं मिला, से अभी तक हमें नहीं मिला। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है काउंट, उसके अंदर लेट से हम बोल देते कि पहला नंबर आप डाल दो 1। नाउ अगेन दिस इज अप टू यू, 1 to 4 करना है, 0 to 3 करना है। अब जब हमारा ये सिनेरियो हो गया ना, नाउ आई विल बी लाइक डायरेक्टली हम कर देंगे रिपीट, एंड रिपीट कंडीशन के अंदर मैंने क्या चलाना है? रिपीट के अंदर मैं बोल दूंगा डायरेक्टली इजी पीसी, मैं बोलूंगा कि इफ जो ऊपर मैंने नेम इनपुट किया था, दिस नेम, इफ दिस नेम इज बेसिकली इक्वल टू जो मेरा स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम जो कि मेरा एरे है, उसके पोजीशन नंबर कौन सा? काउंट। तो अगर ये ट्रू हो जाते हैं कि हमारा जो इनपुटेड नेम है दैट इज इक्वल टू द एरे नेम, तो आपने करना क्या? यू नीड टू गो टू देन, एंड उसके अंदर हमने सबसे पहले ये करना है कि वी विल से कि जो हमारा फाउंड इनिशियली फॉल्स है ना, कि द पर्सन हैज नॉट बीन फाउंड टिल नाउ, वी आर गोइंग टू बी कन्वर्टिंग दैट टू अ ट्रू। सो आई से दैट द फाउंड वेरिएबल नाउ स्टोर्स द वैल्यू ट्रू, सो आई कन्वर्ट दिस इनटू ट्रू। एंड अगर लेट्स से फॉर इंस्टेंस, इफ फॉर इंस्टेंस हमारा नाम सेम नहीं आता, अगर सेम नहीं आता, लेट्स से मनाल इज नॉट इक्वल टू मास व्हिच आई वांटेड टू फाइंड, तो क्या? तो आई वांट कि यार दिस काउंट वेरिएबल इंक्रीजेस, राइट? क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट बच्चे के साथ एरे के अंदर मैं कंपेयर करूं। सो इफ दिस वाज ओरिजिनली 1, नाउ आई वांट इट टू बिकम 2, सो व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन मेक यूज ऑफ अ एल्स स्टेटमेंट अप हियर कि इफ इट्स नॉट इक्वल, तो जो मेरा काउंट का वेरिएबल है ना, increment that by 1, so like count plus 1। And now
ये रिपीट हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। आपके इस दफ़ा जब वो चेक कर रहा होगा तो इट्स गोना चेक कि मास का जो नाम है इज़ दैट इक्वल टू स्टूडेंट नेम काउंट नंबर 2 और नॉट, एंड सो ऑन, इट्स गोना कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू। लेकिन इस तरह तो ये अनलिमिटेड टाइम्स चलता जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा कि यार अब बस करनी है इसको? तो उसके लिए व्हाट आई विल बी मेकिंग यूज़ ऑफ इज़ कि हमने ऊपर रिपीट का यूज़ किया, तो आई विल बी एंडिंग इट विद अंटिल, राइट? मैंने अंटिल स्टेटमेंट भी लिखा है। एंड अंटिल कब तक? Until my found is basically true, until found equals to true, और और मतलब या ये हो जाए कि मुझे नंबर मिल गया और फाउंड ट्रू हो जाए, और दूसरी बात ये कि यार जो मेरा काउंट है ना, काउंट, दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन व्हाट, दैट इज ग्रेटर देन मेरे टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने क्लास में, 4, राइट? सो द मोमेंट इट गोज टू 5, आप उस टाइम पे भी एंड कर दो। एंड दिस इज हाउ बेसिकली द होल मैकेनिज्म वर्क। नाउ अब अगर मैं ये बोलूं कि यार अगर बच्चा मुझे मिल गया ना, आई वांट टू, मे बी द एग्जामिनर सेज कि राइट मीनिंगफुल मैसेजेस। अब अगर एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन में बोले कि राइट मीनिंगफुल मैसेज टू द यूजर, तो इसका मतलब ये कि आपने प्रॉपर आउटपुट करके बताना होता है कि आउटपुट, यस दिस स्टूडेंट हैज बीन फाउंड। अब वो किस तरह होगा? सो आई विल बी लाइक आउटपुट, आउटपुट से पहले मैं ये चेक करूंगा क्या है ये फाउंड मुझे हुआ भी है या नहीं। इफ फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, अगेन नाउ यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफी या कोटेशन मार्क्स नहीं करने से, इफ फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, जस्ट डायरेक्टली आउटपुट student found, student found, again double quotation marks. I lost my marks due to the same reason in A2, so I don't want you guys to make this mistake. Say else, if for instance it's not true, so aapne directly output kar dena hai what, you just need to output not found. And this is the whole mechanism behind how you can write a proper linear search program. अब इसमें हो क्या रहा है, लेट्स सी। अब अगर हम इसको देखें ना, हमने ये बोला कि यार हम एक बंदे हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर मैंने देख लिया कि मेरी लिस्ट के अंदर ये बच्चे हैं। सो लाइक इफ आई हैव टू राइट इट अप हियर अगेन, लेट्स से मनाल, सैफुल्ला, एंड लेट्स से तीसरा मैं खुद हो जाता हूँ मास, एंड आई नीड टू सर्च फॉर द नेम मास। सो हाउ विल इट वर्क? फर्स्टली आई सी कि यार मैंने देखना है कि मैंने इनपुट ले लिया मास का, ओके, इनपुट आ गया मेरी स्क्रीन के पास, आ गया कि कंप्यूटर नोस के दिस पर्सन इज बेसिकली गोइंग टू लुक फॉर द वर्ड मास इन अ स्पेसिफिक एरे। सही है, अब होगा क्या? मैंने ये बोला कि क्या मुझे पता है कि वेदर द नेम मास एग्जिस्ट इन द एरे और नॉट? नो, राइट? सो आई एम नॉट श्योर। सो इफ आई एम नॉट श्योर तो मैंने एक फ्लैग लगा लिया फाउंड, जिसको मैंने फॉल्स डिक्लेयर कर दिया। और दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ फ्लैग। एंड नाउ इन एग्जाम इफ यू वांट टू राइट अ कमेंट इन फ्रंट ऑफ इट, तो आप इस तरह के मार्क्स डाल के फ्लैग सेट टू फॉल्स कर सकते हो, या इस तरह कुछ भी लिख सकते हो। सो लाइक अगर मैं करूँ फ्लैग टू फॉल्स, तो इट्स जस्ट इंडिकेटिंग कि आपने फ्लैग लगा दिया जिसको आपने फॉल्स किया। इन योर 15 मार्क का क्वेश्चन इस चीज के मार्क्स हैं। तो इवन इफ योर कोड इज वेरी वेल रिटन, ट्राई टू ऐड दीज कमेंट्स शुरू में नहीं, अगर शुरू में ज़हन में आते हैं लिख लो। वरना व्हाट आई डिड वाज कि ड्यूरिंग माय टाइम मैंने इस तरह किया था, आई रोट द कोड एट फर्स्ट ग्लांस एंड देन व्हेन आई वाज काइंड ऑफ रीचेकिंग द आंसर, सो उस वक्त आई वाज लाइक कोटेशन मार्क डट डट डट, कोटेशन मार्क डट डट डट, कोटेशन मार्क डट डट। व्हाई? बिकॉज़ आई रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू वन थिंग, आई यूज्ड टू लीव दोस एम्प्टी स्पेसेस एट द स्टार्ट एंड इन मल्टीपल काइंड ऑफ स्पेशल प्लेसेस, जहाँ पे मैं बोलता था कि अगर खुदा ना खास्ता आई हैव टू इंक्लूड समथिंग, क्योंकि यू डोंट नो at the middle of your code you might remember कि oh I need to include a variable, and फिर आप बोलोगे कि oh अब मैं इसको काटूं एक्स्ट्रा शीट में, you don't have that much time, you just have like the advice time is like 45 minutes, but my personal suggestion will be the first uh, half, like the first 60 mark content, if well known, can be done in like 30-35 minutes, so you kind of have a very good amount of time to ace your 15 marker, like make a proper plan and आराम से करना है। so इस वजह से बाद में रीचेक करते वक्त ना आप डायरेक्टली इसमें कमेंट्स डाल दो। सो ना हमने एक कर दिया कि इसको वो कर दिया, फिर मैंने काउंट एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर वैल्यू 1 स्टोर कर दी। व्हाई? अगेन अप टू मी, व्हाई मैंने 1 इसलिए स्टोर की बिकॉज आई काइंड ऑफ टुक द 1 to 4 वाली लॉजिक। बट अगर इसको मैं ये बोलते कि आई वांटेड इट टू बी 0 to 3 वाली लॉजिक, तो फिर यहाँ पे दिस वुड हैव बीन रॉन्ग। सो अगर मैंने 0 to 3 वाली करनी होती तो मुझे क्या लेना होता, काउंट के अंदर 0 लेना होता। तो अब मैंने रिपीट कर दिया कि यार आपने करना क्या है, आपने जो नाम इनपुट किया उसको आपने चेक करना है अगेंस्ट दैट वैल्यू जो कि एरे के अंदर उस स्पेसिफिक काउंट नंबर पे एग्जिस्ट कर दिया। तो अगर आपके नाम और वो चीज एग्जिस्ट इक्वल कर गई, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये चला रहा हूँ मास पहले वाले पे, लेट्स से इफ मास इज इक्वल टू मास,
जो कि I see is. If the two are equal, then I'm say कि okay, the found variable के अंदर true डाल दो, which basically means कि यार if I was looking for the name Mars in a specific array, that has been found. I see कि यार Mars exist करते हैं, इसीलिए दोनों equal हो गए, वरना equal ही ना होते. So when the two become equal to each other, मैंने found को true कर दिया. But let's say for instance, मेरी Mars की जगह the first element comes up as let's say Manal. Now Manal and Mars are not equal, right? So when they are not equal, तो क्या होता है कि found तो true नहीं हुआ. But I go and I rather than running this part, I go and I go to the else part where I run this one. So ये करने का क्या मकसद है? क्योंकि I know कि array के अंदर this might be the first element, this might be the second, and this might be the third one. So I've checked the name against Mars, Manal. It's not true. So now I will be moving to number 2. So उसके लिए मैंने एक increase कर दिया. And so जब मैंने increase किया, this means कि जब code repeat होगा तो the word Mars is basically going to be checked against Saifullah. And अगर वो फिर भी true नहीं होता तो 3 हो जाएगा, जिस सूरत में हम देखते हैं कि if the student name 3 is basically Mars, तो Mars equals to Mars and I get the proper value. लेकिन if you look up here तो एक चीज है, what if I say कि मेरा first ही element के अंदर Mars आ गया, the very first one is Mars. So I told you the previous was inefficient because it was kind of repeating the whole code for no reason. So यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि जब मैंने repeat loop चलाया ना, उसका मकसद ये था कि अगर let's say मेरा found true हो जाता है, अगर मेरा found true हो जाता है, तो you exit the loop. Why? Because you need to repeat until your found becomes true or. Now remember what I told you about or. Or means one of the two conditions. So if one of the two conditions जो मैंने लिखी है, क्या दो conditions है? एक condition मेरी ये कि count greater than 4 हो जाए, और दूसरी condition ये कि found equals to true हो जाए. अगर इनमें से एक condition भी true होती है, like either my found becomes true or my count value basically increases than 4, आपने क्या कर देना? You just need to exit the loop. So if my very first element is Mars and I check it against Mars and दोनों equal आ जाते हैं, तो I see कि मैंने found को true कर दिया. The moment I become convert found into true, what's going to happen is कि मैं found true कर दिया and I'm going to exit the loop. So I exit the repeat until loop, and जैसे वो exit हो जाता है, I come up here जहाँ पे मैंने message लिखना होता है. But let's say for instance loop के अंदर मेरा नाम exist ही नहीं करता, तो यहाँ पे Mars equals to Manal, no. Mars equals to Saifullah, no. Mars equals to Rayan, no. So अगर तीनों नहीं हुआ, तो अगर यहाँ पे originally value क्या थी? ओरिजिनली काउंट के अंदर वैल्यू थी 1. जब मनाल के साथ कंपेयर किया इट बिकेम 2. जब उसके बाद सैफुल्लाह के साथ कंपेयर किया इट बिकेम 3. उसके बाद रेयान के साथ कंपेयर किया इट बिकेम 4. एंड जब रेयान वाले कंपेयर होके नहीं हुआ तो द वैल्यू ऑफ काउंट बिकेम 5. नाउ व्हेन आई came to the until statement, I see whether is my count greater than 4. Yeah, if you see, my count at the very last element is basically now storing 5, which is indeed greater than 4. And this basically ensures that my statement number 1 becomes true. And when this statement becomes true, क्या हुआ? I exit the loop. And so now when I exit the loop, अब मैंने ये देखना है कि मैं loop से तो निकल गया, इसलिए मेरे पास यहाँ पे मुझे ये पता लग गया कि either I know कि value मिल गई है या I know कि value exist ही नहीं करती within the array. But I have to check कि यार exist करती है नहीं. तो मुझे पता है अगर मेरी value मिली हो, तो मेरा जो found variable होगा, that is basically going to be storing the value 2. True, right? But if it's not true, तो this means कि मुझे value नहीं मिली. So I can just make use of a if statement जिसके अंदर मैं clearly बता दूं कि if the found variable has the value true in it, if it has the value true in it, this basically means कि यार नाम मिल गया. So I can directly output yeah student found. Say, and now for instance अगर मैंने ये करना हो कि student किस number पे मिला हो, किस नंबर पे मिला हो, so I can also do that. Why? Because मुझे एक चीज बताओ कि अगर मेरा पहले ही एलिमेंट के अंदर स्टूडेंट काउंट के अंदर वैल्यू क्या है 1 एंड मास इक्वल्स टू मास हो जाए, तो मैं यहाँ पे else के अंदर तो जाऊंगा नहीं क्योंकि this statement is going to get true, and then I'm going to immediately exit the loop, right? So the moment I exit the loop, I see like my count value stays the same. So like my count still has the same 1 value, just the way it was before. So if I want to find the exact position and maybe I want to output के roll number क्या, so I can also extend it like student found at, like इसको अगर मैं थोड़ा सा वो करूँ, at position, and then what I can do is I can end it with a quotation mark, comma, and then I can just write the value variable count, because I see that if I find that my name, the one which I was trying to search, if that's equal to the variable, the value within the array, तो my count variable जिसके through मुझे वो पता लगे कि किस position में array में exist करता है, that's going to be staying the same, right? So because I exit the loop, so if I try to find it like अगर मैं पहले ही उसमें आ गया तो it's going to be true, right? So it's going to output the student found at position 1. It's going to be position number 1. And if let's say it's not true, so आप output कर दो not found. इसके बाद एक final चीज है, this is basically the whole code behind your linear search, and this is very very important and pretty much very easy, to be honest. It's not that difficult if you just look at the code एक दो दफा. It's literally very simple. And now one important point here to note is
कि यहाँ पे हमने दो कंडीशंस किए. You can also kind of write it in brackets too. सही है, I didn't used to do it, but if you want to do it, that's also possible, right? इसका मतलब है दो अलग अलग है. But अगर ये found equal to true को ना, you can also write it in one other way. What you can do is कि if you write it as, if you write a word like found, like until found, or found greater than 4. So your computer, considering कि found is a boolean variable, right, is going to be storing either true or false. तो जब आप found को इसी तरह लिख लेते हो ना, without anything like until found, this is assumed to have the value true. मतलब अगर आप सेपरेटली सिर्फ फाउंड को लिख लेते हो ना, तो दिस मींस कि यू आर सेइंग कि द वैल्यू वेरिएबल फाउंड हैज ट्रू. लेकिन इफ आई वांट टू से कि यार फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, तो अगर आपको याद हो मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक चीज आपको बताई थी, दैट वाज बेसिकली नॉट वाली स्टेटमेंट. वी स्टडीड एंड, और एंड नॉट. वी स्टडी दीस थ्री स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 7 8 में बोथ यूज हो रहे होंगे. सो व्हाट वी कैन डू इज कि इसको मैं इस तरह लिख लेता हूं कि until not found. if I say कि until not found, तो इसका क्या मतलब है, until not found और count equal greater than 4. तो इसका बेसिकली ये मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये कि you are just saying the variable found is basically storing the value false. So it's just to save you space, because अगर मैं until found लिखूं ना, that is way more easier than writing until found equals to true. Say, and just like that, अगर मैंने found equals to false लिख रहे हैं ना, तो इससे it's easier to write it until not found. And it is also something जो examiner directly दे देता है. They might be like giving you a code and उसके अंदर आपको बोल देगा कि until found. So do ensure that you know that until found, if you don't have a not, it basically means true, and if you have a not, so it means false. So if any variable, if any boolean is important, because boolean का यही मतलब है कि even if it's like yes no, अगर मैं तो यहाँ पे true false इसको assume करूँ, but what if I say कि यार boolean variable, अब boolean variable also always stores true and false, always, remember it's always true and false. But if I, let's say for instance yes no के अंदर आपने value store, let's assume, so अगर मैं until found के अंदर करूँ ना, तो it's going to be outputting the positive value which might be yes, and if I say until not found, it's going to be outputting the no value which is basically the negative one. So if any boolean variable has a true value, it can be directly written as, the name of the variable itself, for example के अंदर until found. So when you write until found, तो इसका यही मतलब है कि until found is equal to true. And if it has a false value, if it has a false value, हम ये बोल सकते हैं, if it has that kind of a false value, it can be written as, of course, it can be written as not followed by the variable name, not, and यहाँ पे variable name. So for example के तौर में not false, not found, say. So ये not found basically ये indicate करता है कि it has the value what, false. Whereas अगर हम not को नहीं करते ना, तो इसका मतलब है कि आपके जो variable है, it has the value true in it. So this is one other important point जो कि आपको पता होना चाहिए. And with this we are kind of done with the whole of linear set, which was basically a very simple sort of code. And if you have any questions Manal, to just let me know quickly. समझ आइए, इस सारे कोड को अच्छे से देखो, कोई जल्दी की बात नहीं है, अच्छे से देखो. जस्ट सी कोई सिंगल लाइन भी जो आपको समझ ना आई हो, just let me know, because we need to understand the basic fundamentals behind what's happening and why. So just look at the code and let me know कि कौन सी स्टेटमेंट आपको समझ नहीं है and whether it's clear or not. If it's clear, तो just let me know. Repeat part again. Okay. So होता ये है कि इफ यू लुक अप हियर द कोड जो मैंने आपको ओरिजिनली बताया था ना, फॉर लूप का, फॉर लूप वाले कोड के अंदर एक इशू था. फॉर लूप वाले कोड के अंदर ये इशू था कि अगर मैंने लेट से ये बोल दिया कि मास का नाम पहले एलिमेंट ही मास है, लेट से यहाँ पे पहला एलिमेंट ही मेरे पास ना मास आ गया, मास.
एंड मैंने सर्च इनपुट के अंदर भी मैंने डाल दिया मास। तो अगर मेरा काउंट चलेगा, फॉर काउंट 0 to 3 0 आ गया व्हिच इज़ बेसिकली मास, एंड इनपुट भी मेरा मास ही आ गया, तो ये आउटपुट हो जाएगा फाउंड, राइट? सो आई वांट कि माय कोड शुड एंड हियर, राइट? मेरा बस इसके बाद ना चले, मुझे नाम मिल गया, दैट इज डन। आई डोंट वांट टू कंपेयर माय नेम अगेंस्ट सम। अब ये तो यहाँ पे 4 है, बट व्हाट इफ माय अरे इज ऑफ लाइक 100,000 लेंथ? तो इट्स जस्ट यूजलेस प्रोसेसिंग, राइट? आई डोंट वांट दैट। लेकिन I don't have a choice when I make use of a for loop, because eventually it has to run to a certain number of times, जो कि हम बोलते हैं कि for loop तभी चलता है when you know the set number of iterations. So what do you have to do up here? So in a scenario like this, you make use of the repeat loop. सही है? अब हमने repeat loop के अंदर ये बोला है कि आप repeat loop के क्या लॉजिक होती है? Repeat loop says कि you need to do something consecutively until a specific statement becomes true. Now, if this statement becomes true within the very first execution, कोड बस लूप से निकल जाओ। दूसरे में होता है लूप से निकल जाओ, तीसरे में होता है लूप से निकल जाओ। सो आप जब तक आपकी कंडीशन ट्रू ना हुई हो, द लूप इज बेसिकली गोना वर्क, कंटिन्यू एंड कैरी ऑन। द मोमेंट दिस कंडीशन आफ्टर until becomes true, you see that आप लूप से एग्जिट हो जाते हो। सो वी मेड यूज ऑफ द रिपीट लूप व्हेन वी सेड कि यार अगर अगर लेट्स से मैंने नाम कंपेयर कर दिया है एंड पहला एलिमेंट ही मेरा मिल गया, तो मैंने ऊपर बता दिया कि अगर इस तरह होता है, तो हमने एक फ्लैग बना दिया जिसको हमने नाम दे दिया फाउंड, एंड वी स्टोर द वैल्यू फॉल्स विद इन दैट। देन आई सेड कि यार क्योंकि रिपीट लूप है, इफ यू रिमेंबर वी वर मेकिंग यूज ऑफ रिपीट लूप क्वाइट इफेक्टिवली। उस दिन क्लास में भी हम काफी एग्जांपल्स की थी हमने कि क्योंकि फॉर टू नेक्स्ट में हम बता देते काउंट खुद इंक्रीमेंट होते, यहाँ पे वाली लॉजिक होती नहीं है, तो वी हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑन आवर ओन। सो वी डिक्लेयर्ड अ काउंट वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू 1 असाइन थी। एंड देन आई सेड कि यार आपने करना क्या है, यू मेक यूज ऑफ दिस रिपीट लूप एंड यू नीड टू कंडक्ट इट अंटिल या तो मेरा नाम आ जाए, जिसके लिए ये है कि अगर मेरा नाम इक्वल आ जाते हैं एरे के वैल्यू की, तो आई सेट द वेरिएबल फाउंड जो कि मेरा फ्लैग था व्हिच हैड द डेटा टाइप ऑफ बूलियन, उसको आप ट्रू कर दो, व्हिच मींस कि यार नाउ इट्स ट्रू, राइट? एंड अगर नहीं होता तो बस आप वैल्यू को बढ़ाते जाओ, मतलब इंक्रीमेंट करते जाओ कि आप नेक्स्ट स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करो, फिर नेक्स्ट के साथ कंपेयर करो, फिर नेक्स्ट के साथ कंपेयर एंड सो ऑन, राइट? सो अब दो सिनेरियोज है। अब रिपीट एंटिल लगाने का मकसद ये है कि अगर लेट्स से पहला ही बच्चा माज नाम का आ जाए, तो फिर तो मुझे एक्सिट कर देना चाहिए, राइट? व्हाई वेस्ट माय टाइम ऑन दिस लाइक कंपैरिजन बिटवीन लाइक हंड्रेड्स ऑफ length of arrays, right? Or if scenario gets like only 3, but what if we have like 100,000 length array, which may not exist, but kind of talking just for in terms of an example. When you have a scenario like this, I don't want it to compare the value against some random numbers. तो मैं करता क्या हूँ, मैंने पहले ही बता दिया कि if my until के बाद फाउंड वेरिएबल के अंदर वैल्यू ट्रू हो जाती है, whether it's the first one or maybe it's the 1000 one or the 2001, you just exit the loop. और अगर मेरे काउंट के अंदर जो मेरा काउंट है ये 4 से ग्रेटर हो जाए, 4 से ग्रेटर का ये मतलब है कि मेरे एरे के अंदर है ही 4 बच्चे, तो पहले अगर पहला नंबर मैंने 1 किया तो इसका मतलब है अगर पहले कंपैरिजन किया इट बिकम्स 2, फिर रिपीट हुआ 3, फिर रिपीट हुआ 4, एंड लेट्स से फाइनली जब आखिरी बच्चे सैफुल्ला का यहाँ पे इनपुट हो गया तो दिस काउंट बिकम्स 5, एंड नाउ आई सी कि मेरा आखिरी स्टूडेंट ही सैफुल्ला था, उसके बाद कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आई नीड टू बी एग्जिटिंग लूप राइट नाउ, राइट? मैं ये तो नहीं चाहता कि इट शुड कंटिन्यू फॉर नो रीजन, एंड सो for that reason I say like when the count variable basically has the value greater than 4 which is the max, ये greater than 4 की लॉजिक ये है कि this is max value of the array. See, so when your value exceeds the maximum value of your array, तो आप exit कर दो। एंड फिर उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि यार अगर let's say found true हो गया, which means के काइंड ऑफ मिल गया, मुझे स्टूडेंट मिल गया, तो आई जस्ट से कि आपने स्टूडेंट आपको मिल गया, एंड अगर मैंने उसके पोजीशन नंबर भी बताने, क्योंकि मुझे ऊपर पता है कि जैसे ही मेरा स्टूडेंट फाउंड हो जाता है आई एम गोना एग्जिट द लूप, तो दिस मींस कि मेरा जो वेरिएबल काउंट के अंदर जो भी वैल्यू इट्स नॉट इंक्रीजिंग, इट्स स्टेइंग द सेम, क्योंकि वो कभी एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती नहीं, आप फाउंड करते हो ना आप एग्जिट कर देते हो अंटिल आप चेक करते हैं यू कम आउट, यू नेवर रन दिस स्टेटमेंट, सो आपकी काउंट वैल्यू वही रहती है। सो आई कैन से इफ आई वांट टू स्पेसिफाई दिस स्पेसिफिक पोजीशन, तो मैं बता सकता हूं आउटपुट एंड देन काउंट वेरिएबल, एंड इफ नॉट तो आप बोल दो कि इट्स नॉट फाउंड। सो नाउ इज इट क्लियर नाउ और नॉट? समझ आइए आपको? इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो। Perfect, perfect, perfect.
So with that, we are done with this comprehensive sort of course content related to leniency, which was basically a part of chapter 7, but I covered it under chapter number 8. With that, I will be ending recording for today. Today was kind of a short class because I have a mid tomorrow, inshallah. So I have to go prepare for that too. And so we will be meeting tomorrow. Timings ka I have to see. Um, I might not be available tomorrow at an earlier time. But अगर कल हम let's say जल्दी भी कर लेते तो we can do like 8:30. I will send a poll in the group so you can just vote accordingly and then we can have a time set up. So we will be having a class tomorrow inshallah and maybe also on a Sunday because we need to ensure that we are done with chapter number 7 as well as chapter number 8 by 5th of October. क्योंकि उसके बाद हमने chapter 9 and 10 को अच्छे से करना है in the next 10 to 12 days inshallah. So with that I will be ending the class. If you have any questions you can definitely ask. If not, you are free to leave. Allah Hafiz.